नमस्कार स्वागत करुच्ची आपण को मो चैनल ओएस गुरु इंडियन पॉलिटी जार डेप्थ ओपीएससी प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रे केते अधिक जदि आपण टिके प्रीवियस ईयर पेपर जो एनालिसिस करेंगे ताहले जानी परिबे। तो आज आम यही भिडियो रे वर्तमान आप समय देखिपे मो आईपैड रे दैट इज आपणकर 11:31 PM एंड अनफॉर्चुनेटली मो पुओ भी सोईनी जाए एनीवे सो मु आपण पे डिस्कस करी आज प्रथम चैप्टर दैट इज होची पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीटली आमे कोन ना यूपीएससी रे आस्तिबा प्रीवियस ईयर पेपर जोटा कि पीवाई की एडिशन रो गोटे बही आपणकर सेथिरे आमे टोटल क्वेश्चन पाई जिबा ए ताकू आमे गोटी गोटी करी डिस्कस करबा। तो आज प्रथम प्रश्न है इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रो अर्थ कौन यार आपनकर करेक्ट आंसर हम फेयर एप्लिकेशन ऑफ लॉ। सो आपनकर ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर 2023 रे क्वेश्चन टी आपनकर आस्थिला मन रखिबे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। परवर्ती प्रश्न व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। जदि आम देखा केउ स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन गोटे देश में हाँपाई तार चीफ पर्पजटा डिस्क्राइब कर। सो आप पढ़े या भल भाव देन यू कैन सी डिफाइन्स एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। सो ये हूँ आपणकर कॉन्स्टिट्यूशन पर्पज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। स्टेट को कौ स्टेटमेंट आपंकर भल भाव डिस्क्राइब कर चलते पढ़ा। स्टेटमेंट 1 ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। मत ऑप्शन 1 ही ठीक भाया लगुच। देखा ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल नो ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड नुहे समस्त समस्त जोटे आसुची दैट इज आपंकर ऑल ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलते देखा आज परवर्ती क्वेश्चन टी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। ओके लिबरल डेमोक्रेसी रे जदि हम देखा कौ फैक्टरटा कौन करना लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी को सेफगार्ड कर। सो दैट इज आपणकर जदि हम देखा क्वेश्चन नंबर 4 यार आंसर हम दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ बेटा तुम्हें जाओ मामा पाक को जाओ मो वीडियो बनाऊँगी सॉरी फ्रेंड फॉर इंटरप्शन। सो आपणकर यार करेक्ट आंसर हम सेपरेशन ऑफ पावर। ओके परवर्ती प्रश्न हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स यार अर्थ कौन यार करेक्ट आंसर हम ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम यार करेक्ट आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जब आम जा पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन व्हिच पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जब हम देखा यार आपंकर करेक्ट आंसर हम द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ये हूँ आपंकर करेक्ट आंसर। परवर्ती स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7 से हूँ वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीइज्म एंड मार्क्सिज्म। गांधीइज्म एंड मार्क्सिज्म कॉमन एग्रीमेंट कथा जब आम कह देन आपंकर 7 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हम क्वेश्चन नंबर ए दैट इज द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी। यहाँ हम आपंकर एग्रीमेंट। ओके नेक्स्ट आपंकर 8 क्वेश्चन नंबर को जब हम देखा ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट आखि बंद करके मारे नॉट मल्टी पार्टी गवर्नमेंट नॉट ए पॉपुलर गवर्नमेंट सो लिमिटेड गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके परवर्ती प्रश्न देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट as the most appropriate definition of liberty। चलते पढ़ा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द tyranny of political rules absent of restraint opportunity to do what ever one likes opportunity to develop oneself fully। यार जब आम देखा करेक्ट आंसर देन आपंकर हम अपॉर्चुनिटी टू डेवलप oneself fully यार हम लिबर्टी। ओके परवर्ती प्रश्न को देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ एंड लिबर्टी जदि गुड रिलेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन कथा आम जब देखा तो ये हम आपणकर इफ देर आर मोराल लॉज देर इज लेस लिबर्टी नो
मोर लॉज लेस लिबर्टी ना सेमती किसी ना इफ देयर इज नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी हाँ यहीटा किंतु ठीक जदि किसी लॉ ना देन लिबर्टी ना विदाउट लॉ देयर इज नो लिबर्टी इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय पीपल नो if laws are changed too often liberty is in danger now option B is the correct answer 11 number को देखिए which one of the following regarded as the main features of rule of law रो main features जब हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 तो यार आपण देखि पारचंती कोन लिमिटेशन ऑफ पावर ना इक्वालिटी बिफोर लॉ डेफिनेटली देन आपणकर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट ना लिबर्टी एंड सिविल राइट डेफिनेटली ये आपणकर मेन फीचर्स आप रूल ऑफ लॉ जब आप देखिए सो दैट इज आपणकर 2 and 4 हम करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 रो सॉरी आपणकर पीपल रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट मध्ये आपणकर करेक्ट आंसर हम सो नो एटा तो रॉन्ग ही हम सो लिमिटेशन ऑफ पावर आपणकर करेक्ट हम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ करेक्ट हम लिबर्टी एंड सिविल राइट करेक्ट हम सो 1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओके 12 नंबर जब हम देखिए वन ऑफ द इम्प्लिकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज डायरेक्ट क्वेश्चन बेसी किसी भाबा दरकार नहीं जदि आप पढ़ी देन आप करेक्ट करके आसपारे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट जब आम देखा देन आपणकर ऑप्शन नंबर सी राइट आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट एटा हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन लोकल स्टेट गवर्नमेंट को जब देखा देन आपणकर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भाव में कौन कर डिस्क्राइब कर नेक्स्ट आप देखिए डेमोक्रेसी सुपीरियर virtue lies in the fact that it call into activity क्वेश्चन नंबर 15 को जब देखिए ए हूँ आपंकर करेक्ट आंसर द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन हूँ यार करेक्ट आंसर ओके सो परवर्ती प्रश्न को देखा द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट यार जदि आम देखा एडवांटेजेस पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब आम देखा देन आप द एग्जीक्यूटिव रिमेन रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ये बहुत इंपोर्टेंट स्टेटमेंट मन रखिए एग्जीक्यूटिव रिमेन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर आपंकर सब बेले ये क्वेश्चनटा आपंकर ट्रिक होकर आसी है ओके परवर्ती स्टेटमेंट जब आम देखा क्वेश्चन नंबर 17 रे कौच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट वन दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्वेश्चन नंबर 17 को एंड आर करेक्ट आंसर हो दैट इज ऑप्शन नंबर सी ए मेकानिज्म ऑफ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल क्वेश्चन नंबर 18 जब आप देखिए सी कौन 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 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच सो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिविजुअल लिबर्टी इन द केबे मते नुहे सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 ओके परवर्ती प्रश्न जब हम देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियल द पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस इंक्लूसिव गवर्नेंस कथा जब हम कहवा यार आपणकर करेक्ट आंसर हम दैट इज आपणकर 19 नंबर रे 2, 3 and 4 that is establishing effective district planning committees then increasing the government spending on the public health strengthening the mid day meal scheme आपणकर inclusive government रे permitting non banking financial company to do banking ये आपणकर आसीबो नाही ओके सो ऑप्शन 2, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर हम परवर्ती कथा देखिए कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विथ द हेल्प ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज कार्ल मार्क्स कर थियोरी होची आपनकर डायलेक्टिकल थियोरी ओके मन रखिए डायलेक्टिकल थियोरी थिला आपनकर कार्ल मार्क्स कर हु अमंग द फॉलोइंग रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अलोंग विथ कार्ल मार्क्स बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू कैन नॉट इग्नोर दिस क्वेश्चन इट मे कम्स डायरेक्टली दैट इज आपनकर फ्रेडरिक एंगेल्स लिखिथिले एई बुकटी ओके मैक्स वेबर करके आसीबा दरकार नहीं proportional representation is not necessary in country where ये क्वेश्चन को आप भल भाव देखिए देन आपणकर सॉरी गाइस आई हैव मिसरीड ए क्वेश्चन हियर सो हु अमंग द फॉलोइंग रोड द तो फ्रेडी इंग्लिश ठीक अच्छे परवर्ती प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी इन ए कंट्री वेयर ए 2-party सिस्टम हाज डेवलप्ड जो 2-party अच्छे से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव कौन सी आवश्यकता नहीं In which one of the following countries are 75% of seats in both houses of parliament filled with the basics of fast the post system and 25% on the basis of proportional representative system of election. There are different type of election in different type of country. Italy रे ए सिस्टम टी है
ओल्ड क्वेश्चन आपन यूपीएससी पचारला मे नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ओके नेक्स्ट आपन असर्शन रीजन देखिए द एमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इम्प्लाय द डिक्लाइन ऑफ सोशल आइडियोलॉजी ये हूँ आपन असर्शन रीजन कौन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन द यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ओके सो करेक्ट जब देखिए ए इज फॉल्स आपनकर बट आर इज ट्रू एटा आपनकर फॉल्स आरटा ट्रू परवर्ती प्रश्न को देखा ऑफ द फोर फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट मेंशन बिलो व्हिच वन ऑफ द इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द पर्सन हु इज इट एज ए पॉलिटिकल वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम सो एक हूँ बॉयकट बंद घेराव हड़ताल या भितर कौटा आपनकर पॉलिटिकल वेपन जोटा कि कौन है गोटे पर्सन डिराइव होती सो आपनकर ना हो बॉयकट यू हैव लिसन दैट नाम जेफ्री बॉयकट बट नॉट दैट मच ऑफ रिलेवेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज more or less evolved a two party system यदि आप देखिए बांग्लादेश रिसेंटली न्यूज रे अच्छी सो बहुत इंपोर्टेंट बांग्लादेश रे आप देखिए जे टू पार्टी सिस्टम मोर और लेस अच्छी ओके एंड आप देखिपे कि शेख हसीना को केमती छाड़ा पड़ा गद्दी ओके एंड आज सीरीज चैप्टर लास्ट क्वेश्चन दैट इज आपनकर कंसीडर द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइडिंग सम डिटेल ऑफ द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ कर्नाटक 1994 सो नो नीड आपन वर्तमान देखिए ओके सो चलो जी आज द्वितीय चैप्टर दैट इज आपनकर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जोटी कि आम पार्लियामेंट्री सिस्टम फेडरलिज्म सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशियल सुपरमेसी एंड इलेक्टोरल मॉडल पर डिस्कस करवा ओके सो आज फर्स्ट क्वेश्चन है we adopted parliamentary democracy based on the British model but how does our model differ for the model ये गोटे comparatively question आपनकर एटी दुटा स्टेटमेंट देछि आज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन but in India the power of parliament to legislation is limited in India matter related to the constitutional amendment act on the parliament are referred to the constitution bench of the supreme court सो ये आपनकर पचारि केमती डिफरेंट अच्छी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो सो आपनकर बोथ 1 and 2 आर द जोटी कि आपनकर डिफरेंट अच्छी ब्रिटिश और इंडिया से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडिकेट्स दैट इट इज ए फेडरल इन फेडरल कैरेक्टर कथा जब हम देखा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफगार्ड ये आपनकर क्लियर कट देखा आपनकर फेडरल features union legislature has elected representative union cabinet has elected representative fundamental rights are enforced by the court of law ये आपन सब को फीचर होची दैट इज होची आपन यूनिटरी फीचर्स with reference to India consider the following statement so question number 3 जदि आप भल भाव रे देखिबे there is only one citizenship in one domicile the correct answer बेसी किछि भाबिबेनी हमर कोन अछि ना इंडिया रे प्रत्येक स्टेट रे अलग अलग आपणकर सिटीजनशिप ना पूरा देश गोटे सिटीजनशिप ओके ये हूँ आपणकर करेक्ट स्टेटमेंट किंतु आप स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन अच्छी सो या आपन को देखा पड़ो ऑप्शन रे कौन अच्छी सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट आप देखो ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट नो हेड ऑफ द स्टेट बाय बर्थ केमती हम A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived from his honor. No, this is also a wrong statement. So, आपनकर again option only A ही रहिबो that is आपनकर statement 1. In the context of India, which one of the following is the characteristic appropriately for bureaucracy? Bureaucracy कथा जदि हम देखिबा गोटे an agency for winding the scope of parliamentary democracy, an agency for strengthening the structure of federalism na an agency for facilitating political stability and economic growth definitely not an agency or the implementation of the public policy so bureaucracy कथा जदि हम जेतबे कहूछु से माने कोन करंती गोटे एजेंसी ग्रुप जो माने गवर्नमेंट पॉलिसी रो इम्प्लीमेंटेशन करंती क्वेश्चन नंबर 5 which one of the following is not a feature of Indian federalism so क्वेश्चन नंबर 5 जदि हम देखिबा इंडियन फेडरलिज्म रो फ्यूचर केउटे नुहे सो यार करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फेडरलिज्म रो फीचर्स there is an independent judiciary definitely powers have been clearly divided between center and state definitely the federating unit have been given unequal representation in the Rajya Sabha definitely so apanakar question number 4 option number 4 apanakar it is the result of an agreement among the federation of unit no it is not
सो फेडरालिज्म आपंकर फीचर्स मन रखिए चैप्टर फेडरालिज्म फीचर्स एंड यूनिटर फीचर्स आप डेफिनेटली भल भाव में पढ़ी ने देर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द तो कहीं आम कहीपर इंडियन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री सिस्टम लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल नो पार्लियामेंट कैन amend the constitution no these are the federal features राज्यसभा cannot be decided federal feature council of minister is responsible to the lok sabha ये आपणकर आम या पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीपर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया which of the following principle is are implied institutionally in the parliamentary government ओके सो जदि हम देखा स्टेटमेंट को जब आम पढ़ा देन आपणकर members of the cabinet are member of the parliament correct minister hold the office till they enjoy the confidence of the parliament correct cabinet is headed by the head of the state no head of the state basically president को कहा जाए सो कैबिनेट आपणकर कौन ना जो हेड करते दैट इज आपणकर पीएम सो प्राइम मिनिस्टर सो यहाँ जो आप देखिए सो आपणकर ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर Consider the following statement. Article 371A and 371 were inserted in the Constitution of India to meet regional demand of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, and Arunachal Pradesh and Goa. Constitution of India and the United States of America investigate dual policy, the Union and State, but a single citizenship. I don't think कि आपनकर अमेरिका रे जी मु मन पकई पार्चे से आपंकर सिंगल सिटीजनशिप ना ए नेचुरलाइज सिटीजनशिप इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स सिटीजनशिप नो 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 सेमती किसी ना सी डिप्राइव हो पारे सो ये भी आपंकर आई थिंक कि रॉन्ग स्टेटमेंट सो आपड़ जो 8 नंबर क्वेश्चन टी देखिए ऑप्शन डी आप स्टेटमेंट 1 हम करेक्ट आंसर ओके सो परवर्ती क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स ओके जदि आम देखा ये आपंकर निज निज माने पदवी हिसाब से कौन तार डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस रसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस ए टाइप क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे सो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी दैट इज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ता तलक डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये हूँ आपणकर डिक्रीजिंग ऑर्डर सो ये आप मन रखिए ऑप्शन नंबर बी परवर्ती प्रश्न है आज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अगर आम जब क्वेश्चन को देखा सो डेफिनेटली स्टेट कथा कही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन स्टेट स्पीकर ऑफ लोकसभा मन रखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ये 4 जन मान मध्य आपणकर गवर्नर ऑफ स्टेट्स कौन करती अधिक पसंद ये क्वेश्चन को आम एथर एक्सेप्ट करें एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम रे आसीबो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम इन दैट इंडिया हाज जदि हम देखा देन सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू आमर अच्छी दैट इज आम यूएस वोट आउट कर ब्रिटिश रे एगुड़ा ना बाकी सब थी रियल एंड नॉमिनल हेड थे सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी थी बाइकैमराल थी सब ब्रिटिश रे थी चलन डेट नगर देखा आज थर्ड चैप्टर दैट इज आपणकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि आपण मानक बोर लगुच ताले मो हिसाब से पानी पी दिंतु एंड रेडी जातु राति स्टडी माने आपण देखिए काफ़ी क्वालिटी स्टडी हम ओके सो डेट नगर चलतु देखा आज फर्स्ट क्वेश्चन ए सीरीज दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डे मन रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डे केबे आपणकर होता है सो कॉन्स्टिट्यूशनल डे आपणकर 26 नवेम्बर 1949 रही कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज सेलिब्रेटेड 26 नवेम्बर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द सिटीजनशिप ओके एंड जदि आम देखा परवर्ती स्टेटमेंट है ऑन 26 नवेम्बर 1949 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन नो 1949 रे बेसिकली अगर हम देखा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी जाइतिला किंतु आपणकर 26 जनवरी एथपाई आडप्ट करागला कि 1930 आप मन पकातु जो थी कि आप इंडियन फ्लाग नेहरू कौन करते ना होस्ट करते फर्स्ट टाइम तो ताकू बेस करके आप 26 जनवरी करागला अदरवाइज आपंकर ए कॉन्स्टिट्यूशन रेडी सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जब हम देखा क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
definitely. When a constitutional amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President to India to give his or assent. ये जदि आपण जदि क्वेश्चन देखिए आ गुटे आपणकर ऑप्शन अच्छे ये आपणकर करेक्ट स्टेटमेंट ओके सो परवर्ती क्वेश्चन है a constitutional amendment bill must be passed by both Lok Sabha Rajya Sabha by special majority. There is no provision for joint sitting. Correct ये मध्य आपणकर मत लगे this is 1 to 3 is the correct answer. 1 to 3 is the correct answer. If a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequence of it? Here आपणकर जो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल ये हम आपणकर करेक्ट आंसर. व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? तो 1950 रे आप देखिए देन आपणकर ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला परे आपणकर हला ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके केबे हला आपण कमेंट बॉक्स करे जणैबे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपणकर अगेन आछि दैट इज आपणकर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर होछि आपणकर दुटा जाक स्टेटमेंट पढ़िबे ओके. द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए भल से पढ़िबे. सो दैट इज आपणकर ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स. तो ये आपणकर हम करेक्ट आंसर. इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एनजॉइंड बाय. तो ये जदि आम देखा जुडिशियरी किए आपणकर सेपरेशन करे दैट इज आपणकर 7 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होचे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. एठी आपणकर मेंशन इज सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी कथा. 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ. देखो 9th शेड्यूल बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट आपणकर होल्ड करे. ये आप बार बार क्वेश्चन को आसे दैट इज आप जवाहरलाल नेहरू आई थिंक फर्स्ट आपणकर अमेंडमेंट रेट होता. अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड ऑफ प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग एंड डिक्लेयर टू नो लैंड फैक्ट. मु ऑलरेडी आपणकर इस रिलेटेड चैप्टर बनै सारी आप शेड्यूल रिलेटेड जाकि आप देखने डेफिनेटली हेल्पफुल रहा. करेक्ट आंसर हम 5th शेड्यूल. जी आप ट्राइब रिलेटेड क्वेश्चन जब मिलूँ 5th शेड्यूल आखि बंद करके मारे ओके. क्वेश्चन नंबर 10. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज आपणकर जब देखा करेक्ट आंसर हम दैट इज वन ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस द पर्टिकुलर लॉ ऑफ 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. करेक्ट. द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय एनी कोर्ट और नॉन. नहीं यहाँ भूल अच्छी सो एग्जामाइन हो पार ओके. 11 नंबर क्वेश्चन जदि हम देखिए सीरीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर आज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट देन ताहले कौन हम देन करेक्ट आंसर होची द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. ये होची आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट. परवर्ती क्वेश्चन जो हम देखिबा दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडिड इन द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो ये होची आपनकर 12 नंबर रे इकोनॉमिक लिबर्टी कथा आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे कोआ ही नाही. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following. तो सहीटा जब आम देखा देन 13 नंबर आपणकर आखि बंद कर हवा कथा प्रिएम्बल दैट इज ऑप्शन नंबर ए. इन इंडिया जुडिशियली रिव्यू इम्प्लाइज माने कौन कहे दैट इज आपणकर 14 नंबर क्वेश्चन जब देखिए सो आप जापे दैट इज आपणकर कौन अच्छी ना द पावर ऑफ जुडिशियल टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. ये हूँ करेक्ट आंसर. देन आप क्वेश्चन नंबर 15 जब आप देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट. क्वेश्चन नंबर 15 जब हम देखा दैट इज आप करेक्ट आंसर 1 and 3 हम. परवर्ती क्वेश्चन आप देखिए द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू कौन पे आप 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल मन रखिए डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट. सॉरी बाउंड्री बिटवीन द स्टेट नुहे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स. आई गॉट कन्फ्यूज्ड कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके.
So परवर्ती क्वेश्चन इकोनॉमिक जस्टिस as one of the objective of Indian constitution has been provided in इकोनॉमिक जस्टिस कथा जदि आपनकर कहैछि गोटे जगह कहैछि दैट इज आपनकर प्रिएम्बल रे आ गोटे जगह कहैछि दैट इज आपनकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जदि हम देखिबा देन आपनकर यार आंसर अब नाइदर वन नाइदर टू सो an amendment of the Constitution of India can be initiated by introduction of a bill in the Lok Sabha only ना कौन से हाउस रे भी इनिशिएट करा जाई परिबो अमेंडमेंट बिल को केवल आपनकर मनी बिल को कौन ना राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर जाई परिबो इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वेस्ट इट टू बी ने एथुरे रेटिफिकेशन किछि दरकार नहीं ओके परवर्ती क्वेश्चन जो देखिबा 19 नंबर रे आपण व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन एजुकेशन रे किए आपनकर पार्ट अच्छी दैट इज आपनकर देखिए डीपीएसपी रूरल अर्बन लोकल बॉडी 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल 7th शेड्यूल समस्तंकर किछि ना किछि रेस्पोंसिबिलिटी अच्छी 19 नंबर रे जदि आपन देखिए डी हो आपन करेक्ट आंसर दैट इज आपनकर 1 2 3 4 5 परवर्ती प्रश्न द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन द गवर्नमेंट इंडिया 1931 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 आज जदि आम देखा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कह जाऊँगी बर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन ये हूँ आपंकर डायरेक्ट क्वेश्चन यार करेक्ट आंसर होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि आपंकर इंस्ट्रक्शन दी जाता स्टेट्स को वी शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट आपंकर यार करेक्ट आंसर हम दैट इज आपंकर 5th शेड्यूल ओके परवर्ती प्रश्न जो देखा देन consider the following statement in respect to the financial emergency under the article 360 यार जदि हम देखिबा रेगुलेशन which one of the following given is are the correct then आपण देखिबे 22 that is आपनकर फर्स्ट स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट है प्रोक्लेमेशन फाइनेंशियल इश्यूज ऑल केसेस ऑफ ऑपरेट द expiration of 2 months unless before the expiration that period has been approved by the resolution of both houses of parliament okay so ये अब आपको correct answer then 23 which one of the following subject is under the union list and the 7th schedule of the constitution भूल रे भी क्वेश्चन टी छाड़ी बेनी कारण क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आछि भाई कोन करिवे कोन तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आछि एतिरु सो आपनकर करेक्ट आंसर हो दैट इज ए एरे कौन थी आपणकर रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑल फील्ड ये कौन ही नहीं ये आपणकर यूनियन लिस्ट रे अच्छी ओके मन रखिए ये आप यूनियन लिस्ट रे अच्छी बाकी आपणकर स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट रे अच्छी एग्रीकल्चर फिशरी पब्लिक हेल्थ ओके परवर्त स्टेटमेंट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल ना एटा भूल कहीं डीपीएसपी रे स्पेशली लिखाई जे आपनकर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस नॉट डिफाइंड एक्चुअली जदि हम देखा सो डिफाइन करी नहीं सो इज आर करेक्ट सेकेंड आपनकर डेफिनेटली करेक्ट ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट नो 22 पार्ट ना सो 22 पार्ट आपनकर एक आपनकर भूल गला माने आपनकर ए और डी कटी गला ओके सो आपनकर सेकेंड होची देयर आर 390 आर्टिकल्स ना भूल नेक्स्ट आपनकर 9th 10th 11th and 12th schedule were added to the constitutional amendment India by the constitution correct आपनकर सो सो आपन जो देखिए यार आंसर हम सी तो सेकेंड मध्य आप करेक्ट 390 आर्टिकल ओरिजिनली थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इग्नोर्ड क्वेश्चन किंतु बहुत इंपोर्टेंट दैट इज इट एलोकेटेड सीट्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट मान राज्यसभा एलोकेशन किए करते आपणकर 4th शेड्यूल कराई ओके with reference to the constitution of India which one of the following pair is not correctly matched एटा देखिए बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन मु तो कहबी एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आछो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु आखि बंद करके एटा आपनकर आछी 27 स्टॉक एक्सचेंज कोडी अछि ना करेक्ट कनकरेंट लिस्ट अछि अलगा गुडा कोडी अछि आपण कमेंट करके
जनइबे। 28 नंबर जो क्वेश्चन आम देखा, which one of the following article of the India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impeded or prejudice the exercise of the executive power of the union. यार करेक्ट आंसर हम आपणकर 28 नंबर, दैट इज आर्टिकल 257 आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन ऑल्सो बहुत इंपोर्टेंट मेजर पार्ट आपणकर रहुछि, तो आपको आपण भल भाव में पढ़े। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये आपणकर करेक्ट आंसर अच्छी, दैट इज आपन आर्टिकल 355। ओके, तो ये आपणकर कौन है ना कॉन्स्टिट्यूशन आइटम एंड कौ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन रू से आसी डिस्कसन। डीपीएसपी डेफिनेटली आयरलैंड, फंडामेंटल राइट आपणकर यूएसए हम, देन आपणकर कनकरेंट लिस्ट आपणकर ऑस्ट्रेलिया हम, एंड नेक्स्ट आप इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विथ द गवर्नर आपणकर यूके हम। सो ये हम आपणकर करेक्ट सीक्वेंस। ओके, सो A3 दुटा जगार अच्छे, सो बी मध्य 5 अच्छी। आम डायरेक्ट सी को देखा, सी ऑप्शन रे जोड़ा अच्छी ऑस्ट्रेलिया C1, सी हम आपणकर 1। सो ए स्टेटमेंट आपणकर करेक्ट हम। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ द स्टेट एंड स्पेसिफिक द टेरिटरीज। यार आप आंसर हम, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल कौन है ना नेम ऑफ द स्टेट आउट टेरिटरी स्पेसिफिकेशंस विषय अच्छी। If a new state of Indian Union is to be created, which one of the following schedule of the constitution must be amended? जदि नुआ स्टेट क्रिएट होची देन आपणकर कौन हम ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही आमेंड हम। परवर्ती आपणकर सिलेक्ट लिस्ट 1 and 2 एंड जदि आम देखा आर्टिकल 54 रे आपणकर कौन है प्रेसिडेंट रिलेटेड आपणकर आर्टिकल से देती बहुत इंपोर्टेंट आपणकर देखिए। सो ये हम आपणकर करेक्ट ऑर्डर 1 ऑर्डर 2B 3C 4D अपन सीधा सीधा मैच है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 डिस्कस करें, आर्टिकल 75 डिस्कस करें अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 155 डिस्कस करें अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 164 डिस्कस करें अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये हूँ आपंकर करेक्ट सिक्वेंस। परवर्ती क्वेश्चन जो देखो, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी एजुकेशन। तो मदर टंग कथा जब कहुई 34 दैट इज आपंकर आर्टिकल 350A रे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल आपंकर कौन रहा, दैट इज आपंकर फोर्थ शेड्यूल रहा आलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। सो ये आपंकर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट आप 36 देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिकॉग्नाइज कौन रिकॉग्नाइज करे, दैट इज आपंकर मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन करे रिकॉग्नाइज करे। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कैन बी इनिशिएटेड कौटी इनिशिएटेड हो पार जदि आपंकर पचारा। सो यार करेक्ट आंसर हम आपंकर 1 and 2 दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट इनिशिएट हो पार ना। Which one of the following schedule of the Constitution of India contain provisions regarding anti-defection? Definitely 10th schedule. Okay, so we the people of India ये आपन कर देइछे डैश रे कोन आसीबो आपण पढ़ी की ताको फिल करिवे। यार करेक्ट आंसर हम आपनकर ऑप्शन नंबर बी दैट इज अपन 26 डे ऑफ नवंबर 1949 एंड 40 रे जदि अपन देखिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर ऑन व्हिच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि अपन देखिबे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेशन एमती अछि आपनकर ए नंबर देखिबो 1 2 3 होछि करेक्ट आंसर दैट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट स्टेट इन पार्लियामेंट एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल। ये आपनकर कौन करछि ना मैटर्स व्हिच ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विथ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर और नॉट लेस देन द 1/2। तो विदाउट 1/2 रे ये आपनकर दीटा जोटा आपनकर प्रेसिडेंट इलेक्शन एनी लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन स्टेट पार्लियामेंट ये कौन आइबो रेटिफाइड हो पार। ओके, जीवा परवर्त चैप्टर को दैट इज आपनकर फंडामेंटल राइट्स ता पूर्व नेबा टिके ब्रेक पुणी आम मिलवा पार्ट 2 वीडियो। आज कि तो सब वीडियो अपलोड हम। ओके।